हम ब्रीफली सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, बट देन वेरी ब्रीफली करेंगे, है ना। मैं आपको ये आप लिटरली लिख सकते हैं आपके क्वेश्चन में, अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जैक्ट लिख सकते हैं। हर सेशन के बाद ही जो जितना हमने उस टाइम पढ़ा होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो अगेन एज यूजुअल ये बहुत ही ब्रीफ नोट्स हैं। सो हम लोग मोर ऑफ इसी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है अपसर्ड या फिर अपसर्ड लिटरेचर, जिसे हम कहते हैं अपसर्डिज्म। अपसर्डिज्म, अपसर्ड थिएटर, है ना। वी हैव लिटरेचर ऑफ द अपसर्ड। जो भी आप मान लीजिए, सारे के सारे सेम टर्म्स है। गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द टर्म इज अप्लाइड। ये जो अपसर्ड है, अपसर्डिज्म है, हम किसे कहते हैं? आपको इसमें काफी कुछ ऑलरेडी पता होगा, बट the term is applied to a number of works in drama and prose fiction. कब? Which have in common the view that the human condition is essentially absurd. ये रहा आपका, वेट कीजिए, ये रहा आपका, वेट, मेन पॉइंट है ना, कि जो हमारा ह्यूमन कंडीशन है, जो ह्यूमन लाइफ है, ये विदाउट एनी रीजन है, इज एसेंशियली absurd है, and that this condition can be adequately represented only in the works of literature that are themselves absurd. तो हमें जो लिटरेचर लिटरेरी जो हमें वर्क्स मिलेंगे, जो हमें ड्रामास मिलेंगे, जो हमें प्रोज मिलेंगे, वो भी अपसर्ड ही होंगे, है ना। उसमें वी विल सी, हमें नैरेटिव अपसर्ड दिखेगा, हमें जो है विदाउट एनी रीजन एक्शंस दिखेंगे, हमें टाइम का कोई व्यू नहीं दिखने वाला, टाइम का कोई लिनियरिटी नहीं दिखने दिखने वाला। ऐसे ही जो हमें वर्क्स है लिटरेचर के, वो हमें देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है निहिलिज्म से। हम आगे भी ये पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये निहिलिज्म से स्टार्ट होता है। निहिलिज्म होता है कि विदाउट रीजन, अगर आपके लाइफ में, निहिलिज्म इज द बिलीव दैट लाइफ में कोई इनहेरेंट रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन टू लिव, है ना। पहले के टाइम पीपल यूज्ड टू से कि भगवान है ना, बिकॉज ऑफ गॉड वी आर लिविंग, हमें मोक्ष पाना है, या हमें एक जजमेंट डे आएगा। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट रीजन टू लिव है। लेकिन जो लोग बिलीव नहीं करते, या एटलीस्ट जो फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि नहीं नहीं है, सो देयर इज नो रीजन टू लिव, और इफ देयर इज नो रीजन टू लिव, देन आपका लाइफ जो है अपसर्ड बन जाता है। तो अपसर्डिज्म इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग दिस, कि देयर इज नो इनहेरेंट रीजन एंड एवरीथिंग दैट यू डू विल बी अपसर्ड, है ना। सो ह्यूमन कंडीशन इज एसेंशियली absurd. ये रहा हमारा मेन पॉइंट। Moving on to, and that this condition can be adequately represented only in the works of literature that are themselves absurd. absurd literature में जो भी वर्क्स आते हैं, ड्रामास आते हैं, नॉवेल्स आते हैं, उसमें हमें ये अक्सर देखने को मिलता ही है। Both the mood and the dramaturgy of absurdity were anticipated in as early as 1896. तो ये शुरुआत है, ये बिल्कुल शुरुआत है, जो आपको अर्लीस्ट टेक्स्ट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है इन एल्फ्रेड जेरिस। तो ये रहा आपका पहला। आप ये डेफिनेटली लिख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मिल जाएंगे। इन एल्फ्रेड जेरिस फ्रेंच प्ले, जिसका नाम है उब रोई, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम होता है उबू द किंग। ये आपका शुरुआती टेक्स्ट है। The literature has its roots also in the movement of expressionism and surrealism. आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि absurd literature या absurdism किस किस साथ रिलेशन में है ना, कहाँ से हम लोग जो है किस किस साथ हम कनेक्शन जो है बना सकते हैं। तो the, ये जो लिटरेचर है, absurd literature, it has its roots also in the movements of expressionism and surrealism। दोनों में ही हमें absurdism के थोड़े थोड़े टचेस देखने को मिलते हैं, as well as in the fiction written in the 1920s of फ्रांस काफका। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, काफकास की जो टर्म है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है, फ्रांस काफका का, है ना। इनके दो वर्क्स है, एक है द ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है मेटामॉर्फोसिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस जिसके अंदर हमारा ग्रेगरी वाला कैरेक्टर था, है ना, वन हु टर्न्स इनटू अ बग, है ना, ओवरनाइट। मेटामॉर्फोसिस का जो अगर हम मतलब समझे तो उसका मतलब भी होता है चेंज, है ना, चेंज ऑफ बॉडी। और जो ट्रायल है उसके अंदर तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो एक पर्सन है, एंड सडनली उसे उठा लिया जाता है, सडनली उसे एक ट्रायल में डाल दिया जाता है, और विदाउट एनी रोक टोक वो पकड़ा भी जाता है, और उसे आखिरी में जो है सजा भी मिल जाती है। सो फ्रांस काफका की दो वर्क्स है, ट्रायल एंड मेटामॉर्फोसिस। दोनों में ही आप एब्सर्डिज्म जो है
वो नोटिस कर पाएंगे, एब्सर्डिज्म आप देख पाएंगे। द करेंट मूवमेंट हाउएवर, तो एब्सर्डिज्म जो है हमारा रियली इट इमर्ज्ड इन फ्रांस, है ना, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये रहा द करेंट मूवमेंट। ये एग्जैक्ट लाइन से जो आप ले पाएंगे, द करेंट मूवमेंट हाउएवर इमर्ज्ड इन फ्रांस आफ्टर द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज अ रेबेलियन अगेंस्ट, हाँ तो यहां से भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, as a rebellion against basic beliefs and values in the traditional culture and literature। तो अगर आपको ये बताना है कि कहाँ पे कब शुरू हुआ, तो absurdism started emerged in France after the horrors of the World War II, 1939 से लेकर 1945 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात है ये। एज अ रेबेलियन, ये स्टार्ट कैसे हुआ, एज अ रेबेलियन अगेंस्ट द बेसिक बिलीफ्स एंड वैल्यूज इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, आप ये एग्जैक्ट लाइन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। This tradition has had included the assumptions that human beings are fairly rational creatures who live in an at least partially intelligible universe, है ना, क्या यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। अगेन हमने ऊपर जो है एक्सप्लेन किया था कि विदाउट एनी मीनिंग ह्यूमन लाइफ है, विदाउट एनी इनहेरेंट रीजन टू लिव ह्यूमन लाइफ है। सो जो ह्यूमन कंडीशन है वो absurd है, ठीक है ना। दो निहिलिज्म का एक और रिस्पॉन्स है ना, निहिलिज्म का जैसे एक रिस्पॉन्स है एब्सर्डिज्म, वही एक जो रिस्पॉन्स है वो है हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना, कि अगर कोई मीनिंग नहीं है देन यू कैन क्रिएट अ मीनिंग, है ना, यू शुड क्रिएट अ मीनिंग। चलिए आगे चलते हैं। That they are part of an ordered social structure and that they may be capable of heroism and dignity even in defeat. After the 1940s, however, there was a widespread tendency, especially prominent in the existential philosophy, जिसे हम existentialism के नाम से जानते हैं। क्या है? Existential philosophy of men of letters, such as हमारे जो existentialists हैं, जिनमें पहला नाम आता है जॉन पॉल सार्ट्रे, एंड वी ऑल्सो हैव एल्बर्ट कैमस, कैम्यू कहते हैं कुछ लोग। To view a human being as an isolated existent who is cast into an alien universe, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यूज है, आप देख लीजिए। अगेन जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म कर रहे होंगे तब भी आपको ये काम आने वाला है, ये दो नाम तब भी बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, जॉन पॉल सार्ट्रे एंड एल्बर्ट कैमस। अकॉर्डिंग टू देम, है ना, in this existential philosophy of men of letters such as John Paul Sartre and Albert Camus, to view a human being, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है, to view a human being in an isolated existence who is cast into an alien universe, because हमारा जो aliens है, हमारा जो यूनिवर्स है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। अगर आप अच्छे हैं तो आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा ना, इट डजेंट मैटर, है ना। कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है ना, नो मैटर व्हाट यू डू। सो या दैट इज देयर ना, कोई इनहेरेंट रीजन टू लिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली आप अगर ये करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, देयर इज नो सच थिंग्स, है ना। सो देयर इज नो देयर इज लैक ऑफ एनी रीजन कि आपको ये करना है, ये करना है, देयर इज यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है, एज पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यू और मीनिंग। ये स्टार्टिंग है निहिलिज्म का, है ना। निहिलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कि वी डोंट हैव एनी रीजन टू लिव, वी डोंट हैव एनी इनहेरेंट ट्रुथ, वैल्यू और मीनिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। सो एनीथिंग वट एवर यू डू, है ना, इट डज नॉट रियली मैटर। यहाँ से हमारा absurdism आता है ना, बिकॉज इफ द नथिंग इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो सर्टेन, इमेजिन कीजिए आपको मैंने अगर फील्ड में छोड़ दिया है ना, एंड आई से कि कोई रेस नहीं है, देयर इज नथिंग, है ना, कोई प्राइज टू विन नहीं है, देन व्हाट विल यू डू, यू नो नथिंग यू मेक, नथिंग यू डू विल एवर क्रिएट एनीथिंग, एनी वर्दी आउटकम, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि ओके लेट्स वी विल रन इन अ रेस, एंड जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा, नाउ यू हैव अ पर्पस, नाउ यू हैव अ रीजन टू लिव, नाउ यू हैव समथिंग टू स्ट्राइव फॉर। बट इफ आई से कि देयर इज लाइक जो करना है करो, इट डजंट मैटर, देन आपका एग्जिस्टेंस उस प्लेग्राउंड के अंदर इट बिकम्स absurd, है ना। सो दैट इज व्हाट absurdism इज। एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स fruitless search for purpose and significance as it moves from the nothingness whence it came towards the nothingness where it must end। तो ये अब हम जाने वाले हैं द मिथ ऑफ सिसिफस की तरफ। आई थिंक कि आपको जो है बहुत इसमें प्रॉपरली पता है कि एब्सर्डिज्म अब क्या होता है ना। यहाँ पे ढेर सारे वेज में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक आपको ये अब एग्जैक्टली क्लियर है ना। दोबारा हम पढ़ लेते हैं ये। एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स फ्रूटलेस सर्च, है ना, फ्रूटलेस बोला है बिकॉज अब कुछ मिलने नहीं वाला, फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पस
and significance as it moves from the nothingness whence it came toward the nothingness where it must end, है ना? चलिए आगे एज एन एग्जिस्टेंस विच इज बोथ एंग्विश्ड एंड absurd, है ना? यहां से हमारा absurdism रियली है। अब एल्बर्ट कैमस का एक बहुत फेमस वर्क है जो है द मिथ ऑफ सिसिफस। इसके अंदर होता क्या है, जो सिसिफस है उसको ज़्यूस कर्स करता है कि आपको जो है एक रॉक, है ना, बिकॉज सिसिफस जो है ही वाज चीटिंग डेथ, है ना, ही वाज चीटिंग डेथ टाइम टाइम टू टाइम, है ना, वो एक किंग होता है, वो वाज चीटिंग डेथ एंड फाइनली ज़्यूस से कर्स करता है कि व्हाट विल यू विल हैव टू डू इज आप एक स्टोन को लो और आप जो है उसे ऊपर आप उसे ऊपर जो है धकेलते रहो एक अपहिल। सो वो यही करता है, ही गोज अपहिल, वो उसे ऊपर की तरफ ले जाता है एंड एट सम पॉइंट वो वहां से लुढ़क के दोबारा नीचे आती है। तो सिसिफस को दोबारा नीचे आना होता है, दोबारा वो उस पत्थर को पकड़ता है और दोबारा उसको ऊपर लेके जाता है ना, एंड दिस कीप्स ही कीप्स डूइंग दिस टिल इटर्निटी, है ना, वो बार बार ये करता है एंड द सैड पार्ट इज और द क्रिटिकल पार्ट इज कि ही नोस कि वो ये बार बार कर रहा है ना, एंड ही स्टिल डज दैट। हमारा ह्यूमन लाइफ भी वैसा है ना, नो मैटर व्हाट सिग्निफिकेंट एक्शन यू टेक उसका कोई मतलब नहीं है ना। लाइक फॉर एग्जांपल टेक दिस, फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट पे यू आर टेकिंग दिस लेक्चर ना, इवन इफ यू like do this lecture or don't do this lecture, it doesn't really matter, है ना, even if you land a job or you don't land a job, it doesn't really matter because at some point you'll die, at some point like whatever you do it will उसका जो इफेक्ट है ना, इट विल बी लाइक नथिंग, है ना। अगर आपके इवेंचुअली आपके जो है जो एंसेस्टर्स है ना, या जो आपके बाद में आने वाले हैं, वो डिसेंडेंट्स जो हैं, वो लाइक ऑल ऑफ देम विल डाई, है ना। सो एट सम पॉइंट ऑल ऑफ दिस दीज एक्शंस, है ना, जो आप लेते हो, जो आपका मोरलिस्टिक लाइफ है या आपका से मोरलिस्टिक लाइफ नहीं है, नो मैटर व्हाट यू डू, इट डजंट रियली मैटर, है ना। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है एंड कोई सिग्निफिकेंट एक्शन जो है हमें नहीं दिख रहा कि जो हम ले सकते हैं और उसका कुछ निकल के आने वाला है। सो इट्स absurd, इट्स वेरी absurd. So kind of we are also stuck in this life like Sisyphus, है ना, we are just doing whatever we can, we are living our life however we can, just like this Sisyphus is pushing that stone on the mountain and then दोबारा it gets reset, है ना, आप मर जाओगे, someone else will take over and then he will also do the same thing, he'll keep on living, keep on earning, try something and then eventually that person will also die. So it's absurd, we can see a part of us in Sisyphus. So कैमस के कुछ वर्ड्स हैं, बहुत वेज में जो वर्ड्स है बहुत वेज में एब्सर्डिज्म को शो करते हैं। In a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger, है ना? Because why do we feel like a stranger? Because we don't know exactly हम कर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। You have no idea कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या करने आए हैं। What should we do? There is no written rules, है ना? His is an irredeemable exile, है ना। So we are in exile, we feel like कि हमें जो है टॉर्चर किया जा रहा है, we feel like कि हमें एक सजा मिला हुआ है, because again we have no idea कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we have no idea कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। We do things on a whim, we do things on the commands of people before us, but we have no real idea कि हमें exactly क्या करना है, or how do we get, like how do we escape or go to somewhere where meaning exists, where reason to live exists. This divorce between man and his life, because we exist but we don't have any reason to live, है ना। So there's a divorce between man and his life, the actor and his setting truly constitutes the feeling of absurdity. So this is absurd, है ना। For example, अगर आप जो है, if I tell you, अगर आप कुछ ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं ना जिससे जिससे कुछ मिलने नहीं वाला, so I'll like say to you कि ये why are you like wasting your time, why this absurd action, and because you won't be able to say कि मैं ये you won't be able to give the reason कि आप जो कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, which makes that absurd, है ना, kind of like our life. नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है अगेन, जो लाइंस अंडरलाइन है, मेक श्योर आपको जो है ये याद रहे, मेक श्योर आपको ये लाइंस जो है याद रहे। अगेन इट्स दिस इज अ गुड एग्जांपल, द मिथ ऑफ सिसिफस, अ वेरी गुड एग्जांपल। डेफिनेटली अगर आप एब्सर्डिज्म कर रहे हैं तो यू विल एट वन पॉइंट यू विल हैव टू गिव दिस एग्जांपल ऑफ द मिथ ऑफ सिसिफस। अगेन आपको जरूरी नहीं कि आप जो है लाइन कोट करें, बट जो नाम है वो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए। ओके, सो वन एग्जांपल इज दीज लाइंस बाय सॉरी दिस नॉवल कैमस का द मिथ ऑफ सिसिफस। नाउ सेकंड इज और एज यूजीन आयनेस्को, है ना। तो हमारे पास एक और ऑथर है यूजीन आयनेस्को, वेरी फेमस फ्रेंच ऑथर।
और ये इन्होंने लिखा है द बैल्ड सोप्रानो अगेन एंड द लेसन 1951 का। दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, कहाँ पे, थिएटर ऑफ absurd के अंदर, है ना। अगेन ये एग्जांपल्स है जो आप डेफिनेटली शो कर सकते हो। एंड अदर प्लेस इन द थिएटर ऑफ द absurd हैज पुट इट, तो वो क्या कहते हैं, कट ऑफ, this is what he says, cut off from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost. He, without our religion, without our metaphysical, like say, beliefs, without our transcendental roots, we as like we men, we are lost, है ना। We have no, like, because आपको कोई reason to live नहीं है, because there is no reason to live without them, है ना। Inherent meaning है नहीं, and all that we have या had actually is God के commandments, है ना, so called God के commandments, है ना। We have different religions who preach different commands, different books and etc etc. We kind of are very dependent on those. Okay. So Ionesco also, all his actions become senseless, absurd, useless. So these are the lines. Again, very important lines. बहुत ऑलमोस्ट हर एक वर्क में आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा जिसमें आपको एब्सर्डिज्म का जो पूरा डेफिनेशन है वो मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। Ionesco also said in commenting on the mixture of moods in the literature of absurd. People drowning in meaninglessness can only be grotesque. Okay? People drowning in meaninglessness can only be grotesque. Their sufferings can only appear tragic by derision. तो ये रहा आपका जिसके बारे में हमने बात किया है, वी हैव यूजीन आयनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सैमुअल बेकेट, और उनका उनका मोस्ट फेमस वर्क है और एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है एब्सर्डिज्म के अंदर। वी हैव सैमुअल बेकेट हिमसेल्फ, क्रिकेट के फैन थे ये सैमुअल बेकेट, और इनके दो वर्क्स, एक है वेटिंग फॉर गॉड 1954 एंड दूसरा है एंड गेम जो कि है 1958। तो सैमुअल बेकेट द मोस्ट एमिनेंट एंड एसेंशियल राइटर इन दिस मोड, कौन सा मोड, थिएटर ऑफ absurd या फिर absurdism आप कह सकते हैं, बोथ इन ड्रामा एंड इन प्रोज फिक्शन, was an Irishman. Who he was? He was an Irishman living in Paris who often wrote in French and then translated his works into English. Something about Samuel Beckett. His plays, though, were not and Endgame, project the irrationalism. Again, these are the features, characteristics जो आपको देखने को मिलेगा where absurdism के अंदर, irrationalism, helplessness, again a very important attribute, and absurdity of life in dramatic forms that reject the realistic settings, है ना। Again, rejection of realistic setting is also an attribute of absurdism. Rejection of realistic settings, rejection of logical reasoning, or a coherently evolving plot. This is also something that doesn't happen. Coherently evolving plot, you'll find this in other texts, but you will never find this in absurdist works. So, पहला हमारे पास एग्जांपल है वेटिंग फॉर गॉड। व्हाट हैपेंस, वेटिंग फॉर गॉड प्रेजेंट्स टू ट्रैम्प्स इन अ वेस्ट प्लेस, है ना। वी हैव टू ट्रैम्प्स, टू पीपल in a waste place, fruitlessly and all but hopelessly waiting for an unidentified person whose name is Godot, or at least whose name we know as Godot, who may or may not exist and with whom they sometimes think they remember that they may have an appointment. So this is the story. This is the whole story of waiting for Godot. Right? The two people waiting for Godot. They think that they have an appointment with Godot, that he will come, he will definitely come, but he never comes. Right? As one of them remarks, nothing happens. So ये remark है, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. Like most works in this mode, the play is absurd in the double sense that it is grotesquely comic and also irrational and non-consequential. Sorry, non-consequential, consequential. मैं सच्ची से pronounce नहीं कर पा रहा है anyway. Consequential, ठीक है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। इट इज अ पैरोडी, पैरोडी क्या होता है, कॉपी, है ना। पैरोडी इज मोर लाइक से जब आप किसी को कॉपी करते हो, जब आप किसी को एग्जैक्टली वही परफॉर्म करते हो जो किसी और ने परफॉर्म किया है, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे, है ना। मतलब एग्जैक्टली आप वही कॉपी कर रहे हो, बट इन अ वेरी जोकिंग और सार्कास्टिक वे, देन इट्स अ पैरोडी। इट इज अ पैरोडी
not only of the traditional assumptions of Western culture, but of the conventions and generic forms of traditional drama, है ना? And even of its own inescapable participation in the dramatic medium, the lucid but eddying and pointless dialogue is often funny, and pratfalls and other modes of slapstick are used to give a comic cast to the alienation and anguish of human existence. This is ये पूरा का पूरे ये बहुत वेज में जो है वेटिंग फॉर गॉड को डिफाइन करता है ना बिकॉज वी सी एलिनेशन वी सी जो है कैरेक्टर्स का एलिनेशन एंड वी आल्सो सी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एंग्विश. Now, Beckett is also famous for his prose fiction. Beckett's prose fiction, such as Malone Dies and The Unnameable 1960 में जो आया था. They present an anti-hero who plays out the absurd moves of the end game of civilization in a non-work which tends to undermine the coherence of its medium language itself. But typically Beckett's characters carry on even if, for example, हमने multiple works में देखा है कि Beckett के जो characters हैं, they carry on even if in a life without purpose. So very important line. Beckett's characters carry on even if in a life without purpose, trying to make sense of the senseless and to communicate the uncommunicable. ठीक है? ये रहा आपका बहुत वेज में पूरा. अब इसके बाद हमारे पास कुछ और राइटर्स हैं उनके अंदर फर्स्ट है वी हैव जीन जेनेट. आपने ऑलरेडी कुछ ऑथर्स के बारे में पढ़ रखा है. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है जीन जेनेट. अनदर फ्रेंच playwright of the absurd was Jean Genet who combined absurdism and diabolism. तो देखिए एक और चीज है आई डोंट थिंक कि डायबोलिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन मतलब आएगा बट डेफिनेटली absurdism इज अ वेरी lucrative टॉपिक. इसके ऊपर डेफिनेटली आ सकता है. some Some of the early dramatic works of the Englishman Harold Pinter and the American Edward Albee. Edward Albee की कुछ works भी है. For example, Virginia Woolf, Who's Afraid of of Virginia Woolf. ये इनका बहुत ही prominent, बहुत ही important text है. Edward Albee are written in a similar mode. The early plays of Tom Stoppard, for example, Tom, मैं यहाँ पे वो करता हूँ ना. We have Harold Pinter, we have Edward Albee, and then we have Tom Stoppard such as Rosencrantz and Guildenstern are dead. Very important इस absurdism के ways में. And we have travesties. ठीक है? Exploit the devices of absurdist theater for a more for comic and philosophical ends. There are also affinities with this movement in many works that exploit first black comedy जिसे हम black humor के नाम से भी जानते हैं, baleful, inept characters in a fantastic or nightmarish modern world play out their roles in what UNESCO calls tragic farce. ये एक important है आपको definitely इसको check out करना चाहिए. In which the events of are often simultaneously comic, but then comic के साथ साथ जो है ये horrifying भी होता है और absurd भी होता है. Examples are we have Joseph Heller का Catch 22, we have Thomas Pynchon का V, we have John Irving ka The World According to Garp, and some of the novels by the German Gunter Grass and American Kurt Vonnegut Jr. सभी नाम आपने पहले भी सुन रखे हैं और अब भी सुन रहे हैं. And John Barth. Next is Stanley Kubrick. ये तो आपको पता है very famous. Stanley Kubrick is well known for his Odyssey है ना Odyssey that science fiction. Space Odyssey. मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है but I'm guessing it's Space Odyssey. So Stanley Kubrick's Doctor Strangelove 1964 is an example of black comedy in the cinema. Some playwrights living in totalitarian regimes used absurdist techniques to register social and political protest. See, for example, Largo Desolato 1987 by the Václav Havel Havel. We have The Island, a collaboration by the Southern African writers Athol Fugard and John Carney and Winston Shona. Let me make sure ये अभी भी चल रहा है. For some reason रुक गया था. Live है. I think. Give me a moment to check this.
Okay, it's live. Uh, Let me reopen this. Okay, it's on. It's on. Let's go forward with this. So we have academic novel या campus novel है ना. Usually एक ऐसा novel होता है जिसके अंदर we see setting जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी है या कोई पढ़ाई वाला कोई इंस्टीट्यूट है ना. एंड a lot of that novel उसके उस सेटिंग में जो है परफॉर्म होता है. So again, we will go through a few examples definitely, और आपको इसके बारे में enough information होगा कि you will be able to write on it. A novel set primarily in a college or university community in which the main characters are academics, often employed by the English department. So very good. यही पे आपका main जो definition है वो complete हो जाता है. Like detective stories or murder mysteries, many of which are set in British country houses, academic novels frequently exploit the fictional possibilities created by a closed environment in which a number of highly distinct, often idiosyncratic personalities are thrown together. In the case of the murder mystery, the celerity of the setting can produce a sense of heightened tension. But in the academic novel, the sequestered character of the campus often results in an atmosphere of comic inconsequentiality. चलिए, most academic novels are humorous, and तो ये कुछ features है. Most academic novels are humorous and many explore the implications and the variously attributed maxim that academic politics is so vicious because the stakes are so low. Even so, academic novels have, on occasion, addressed more serious themes including power, sex, class, and banishment and exile. कुछ examples देख लेते हैं, then we'll move forward. The satiric old Aristophanes, is as old as Aristophanes the cloud. दोबारा पढ़ लेते हैं. The satirical portrayal of dreamily impractical thinkers is as old as Aristophanes the clouds, which depicts Socrates riding through the heavens in a basket. And novels such as George Eliot's Middlemarch, Thomas Hardy's Jude the Obscure, Cather's The Professor's House, and Dorothy Sayers गौरी नाइट. The deal with academic settings और characters. तो सबको मैं एक बार वो कर देता हूँ. We have this. We have George Eliot का Middlemarch. We have Thomas Hardy का Jude the Obscure. We have Cather का The Professor's House. We have Dorothy L. Sayers का Gaudy Night. So they all deal with academic settings or characters, but the modern academic novel is generally thought to date from the mid 20th century, with the beginning marked by the appearance in Great Britain of C.P. Snow's The Masters, and Kingsley Amis's Lucky Jim, and in the United States, Mary McCarthy, The Groves of Academy. Among most Among most widely known British academic novels are Malcolm Bradbury, we have the History Man, trilogy of David Lodge, जिसमें आता है Changing Places, The Tale of Two Campuses, Small World, and Academic Romance, 1984, and Nice Work. Evelyn Waug's Brideshead Revisited, 1945, is considered a next हमारे पास है varsity novel. Don't worry, इसको हम आगे जाके जो है we will cover this also कि varsity novel क्या होता है. A predominantly British genre, generally set at Oxford or Cambridge, in which the primary characters are undergraduates rather than faculty. चलिए आगे चलते हैं. Noteworthy American instances of academic novel are Vladimir Nabokov का Pin and Pale Fire, वही John Barth Giles, okay, in which through an elaborate allegory the universe is refigured as a university. ओके, फिर दो चार और एग्जांपल है. एलिसन ल्यूरी द वॉर बिटवीन द टेट्स, डॉन डीलिलो's white noise, we have Michael Chabon Wonder Boys, we have Richard Russo Straight Man, and then finally we have the Philip Roth का The Human Scale. ये तो हो गए जो जो एकेडमिक नॉवेल्स हैं. लेकिन अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Over the years, academic novel has registered not only the current
of larger culture, but also the changing nature of academic life, है ना? Because recently it's very different. If many of the earlier instances of the genre depicted the college or university community as pseudo-pastoral enclosure with its quaint rules and conventions, more recent novels have treated the same setting as a microcosm, a more tightly focused or intensified version of the larger world, in which ideas and values circulating through the broader culture emerge in high relief. The tone of the academic novel in the first years of the 21st century is darkened as the working conditions of many teaching faculty deteriorated, and the educational mission of the university was superseded by the economic priorities of increasingly corporatized institutions. इसके बाद एक और है एडजंक्ट नॉवल, ये भी हम लोग जो है बाद में कंप्लीट कवर करेंगे। एडजंक्ट नॉवल क्या होता है? फॉर द एडजंक्ट नॉवल इन विच द प्राइमरी कैरेक्टर्स आर मार्जिनलाइज्ड, ये अंडरपेड या फिर उनके ऊपर जो है अत्याचार किया जाता है, अनटेन्योर्ड फैकल्टी whose positions expose them to uncertainty, deprivation and anxiety rather than protecting them from it. So ये एक अच्छा मतलब डेफिनेशन है, आप इसको भी जो है एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इट और ये हम नहीं करने वाले। लेट्स मूव ऑन यूनिवर्सिटी नॉवेल्स। नेक्स्ट जो है वो है एक्ट और सीन क्या होता है। डेफिनेटली इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, एक्ट और सीन। तो अगेन आपने बहुत सारे, ये आपको ऑलरेडी पता होगा ना, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, स्टिल विल कवर दिस, थोड़ा सा ही है। लेट्स स्टार्ट। एक्ट क्या होता है? एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन। अभी अगेन यही है, ये वो वर्ड्स है जो आपको जो है लिखना है। एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन in the action of a play. In England, this division was introduced by Elizabethan dramatists. For example, you see this in works of Shakespeare. शेक्सपियर के अंदर आपको एक्ट भी लिखते हैं, यूजुअली जो है वो 5 एक्ट्स के होते हैं, उनके उनके जो ड्रामा होते हैं। In England, this division was introduced by Elizabethan dramatists who initiated ancient Roman plays, who imitated मतलब कॉपी करना an ancient Roman plays by structuring the action into 5 acts. So this is something that you already know. Late in the 19th century, a number of writers followed the example of Chekhov. ये एंटोन चेखव की बात कर रहे हैं, and Henrik Ibsen. So, in the 19th century, a number of writers followed the examples of Anton Chekhov and Henrik Ibsen by constructing plays in 4 acts. तो ये एक थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है। पहला वाला 5 एक्ट का होता था, ये 4 एक्ट का है। In the 20th century, the most common form of traditional non-musical dramas has been 3 acts. और ये जो है ये हम लोग जापान में जो है अक्सर देखते थे, जापानीज जो होते थे, they are Japanese dramas, they are usually 3 act plays या 3 act dramas, which is very famous in the 20th century. Acts are often, अब now ये तो रहा आपका sorry. Acts are often subdivided into scenes. So what are scenes? आपके पास act है ऊपर, and act is a major division in which in the action of the play, and acts are often subdivided into scenes, है ना? Which in the modern plays usually consists of units of action in which there is no change or replace or break in the continuity of time. Something you should be careful about. आपको definition में ये भी include करना पड़ेगा. So acts are often subdivided into scenes, which in modern plays usually consist of units of actions in which there is no change of place or break in the continuity of time. चलिए आगे चलते हैं। Some some more recent plays dispense with the division into acts and are structured as a sequence of scenes or episodes. In the conventional theater with a Promethean arch, क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। Promethean arch that frames the front of the stage and the end of a scene is usually indicated by a dropped curtain or by a dimming of the lights. So this is how sometimes we show की end of a scene, what is end of a scene, है ना? दोबारा देख लीजिए। That frames in a conventional theater with a Promethean arc that frames the front of the stage,
The end of a scene is usually indicated by a dropped curtain or a dimming of the lights, and the end of an act by a dropped curtain and an intermission. So this is what act and scene are. तो यहाँ पे आपका एक्ट और सीन का जो हमारे चार टॉपिक यहाँ पे डन है. नेक्स्ट इज एस्थेटिक. बहुत है. लेट्स ट्राई टू कवर एज मच ग्राउंड एज वी कैन. विल कवर एज मच टॉपिक्स एज वी कैन. सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है. वी आर नॉट डूइंग समथिंग जो आपके पेपर में नहीं आ सकता है. मोस्ट प्रोबेबली में से हर एक जो टॉपिक है वो डेफिनेटली आ सकता है. अगेन ये ब्रीफ नोट्स में आप छोटा करके लिख सकते हैं और डेफिनेटली लॉन्ग में तो लिख ही सकते हैं. चलिए आपका नेक्स्ट है. नेक्स्ट है आपका एस्थेटिक आइडियोलॉजी. क्या होता है एस्थेटिक आइडियोलॉजी? वाज अ टर्म applied by the deconstructive theorists Paul D. Mann. ओके, वेट. इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक. इसके बाद हमें एस्थेटिसिज्म भी करना है. तो बिफोर वी डू aestheticism, we will cover aesthetic ideology, है ना. We'll know a lot about this before going into that. uh, let's take a 1 or 2 minute break and then we will start from here, है ना. Start from here, aesthetic ideology. Again, this is the fourth topic that we are doing. Let's go back to the first one because हमें हमें हमारे पास ऐसे ना नंबर रहने वाला है. नंबर. So first we have absurdism, then we went to second is academic novel, जिसे हम यूनिवर्सिटी नॉवल भी कहते हैं, जिसे हम कैंपस नॉवल भी कहते हैं. थर्ड इज एक्ट और सीन. क्या होता है? अगेन वी कुड से कि ये थर्ड एंड फोर्थ दोनों है, बट एक्ट एंड सीन एक बार में आता है. तो थर्ड एंड द फोर्थ इज एस्थेटिक आइडियोलॉजी, जिसपे हम अभी है. लेट्स टेक अ 2 minute ब्रेक, है ना. वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर. Again, I have a, like at this point what I am trying to do is कि हम हर एक चीज कवर करेंगे, है ना. uh, since we are in this process जहाँ पे we are pursuing education, we are pursuing कि इस particular जो literature field है, इसमें we want to do better. We'll leave no stone unturned, है ना. We'll try to cover as much ground as we can. We'll try to learn as much as we can about a particular concept, है ना. So yeah, every day we'll keep doing this. Let's see कि हम कितना और कवर कर पाते हैं ना. योर एग्जाम्स स्टिल थोड़ा सा दूर है अभी भी वो टाइम, बट वी विल कीप ऑन कवरिंग दिस, है ना. आज हमने स्टार्ट किया है. आज से आपका जो ये मोर ऑफ आपका रिवीजन क्लास है ना. आपके जो स्टार्टिंग थे, जो हमारे लंबे सेशंस थे वो ओवर हो चुके हैं. जिसमें हमारे जो वो पीडीएफ आपके पास शेयर्ड है, शॉर्ट नोट्स भी आपके डन है. तो दोनों जो मेन चीजें जो मुझे कराने थे वो वी हैव ऑलरेडी डन. एंड दिस इज अ ब्रीफ इन ब्रीफ यू कैन से रिविजन इफ यू वांट टू. अगर आपने इनमें से इससे पहले जो है ध्यान नहीं दिया, दिस इज समथिंग दैट यू शुड, है ना, और शुड एक्चुअली पे अटेंशन टू. एंड अगेन टॉपिक्स हम सब करने वाले हैं. स्पेशली अगर कोई चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं. If you have missed something or if you have not understood something or if you have felt like disinterested or something like that, if you have not covered a, like a few topics or say many topics, doesn't matter. इसमें आपके वो सबके सब कवर होने वाले हैं. बहुत ही सिंक में है, बहुत ही ऑर्डर में है. सो एंड अगेन मैं इसमें ना मैं इसमें वो देने वाला हूँ. मैं इसमें जो है स्टैम्प भी देने वाला हूँ कि आप कौन से टॉपिक के बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं. नंबरिंग रहने वाली है. यू वॉन्ट मिस अ थिंग, है ना. आप अगर इवन अगर आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, यू विल स्टिल नॉट मिस अ थिंग. ओके, वी हैव 20 minutes लेफ्ट. लेट्स ट्राई टू डू 2 or 3 टॉपिक्स, है ना. सो हमारा नेक्स्ट है एस्थेटिक आइडियोलॉजी. क्या होता है ना. आइडियोलॉजी ऑब्वियसली आइडिया से बनता है, आपके बिलीफ से बनता है, वैल्यूज से बनता है. So it was a term applied by the deconstructive theorist Paul D. Mann. Again, when you encounter names like this, Paul D. Mann, and अगर सामने आपको ऐसे terms मिल जाए कि ये deconstructive theorist है, तो इसे आपको याद रखना है ना. Obviously ये आगे काम आएगा. So yeah, aesthetic ideology was a term applied by the deconstructive theorist Paul D. Mann in his later writings to describe, in his later writings, to describe the seductive appeal. Wait, इससे मैं अपना writing जो है खराब नहीं करना चाहता. Wait a second. Wait a second. Let me drink some water before continuing this.
आई विल ट्राई कि आपसे जो हमारे सेशन है इसमें ऐसा ना हो कि आई एम फीलिंग डिसइंटरेस्टेड. Definitely I'll be more. ah, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हाँ, तो हम हैं एस्थेटिक आइडियोलॉजी में. So it's a term applied by the deconstructive theorist Paul Riemann. किसमें, कहाँ पे? In his later writings. ठीक है. किस लिए? To describe the seductive appeal of a aesthetic experiences. Seductive क्यों बोला है? Because it's very attractive, है ना? It tends to attract people. In which he claimed form and meaning. Again, very important. In this aesthetic ideology, what did he claim? He claimed form and meaning, perception and understanding, and cognition and desire are misleading. Again, you should know this. हम एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, हम ब्यूटी, जो एस्थेटिक्स है इन मोर वेज इज द परसुएशन, द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, है ना. सो व्हाट इज सेइंग इज, he's saying form and meaning, perception and understanding, cognition and desire, every single thing are misleading and sometimes dangerously conflated. ये भी मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं. And dangerously conflated. Diemann traces the aesthetic ideology to Friedrich Schiller. Again, very important. Friedrich Schiller's The Letters of the Aesthetic Education on Man. रुकिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना. फ्रेडरिक शिलर्स लेटर्स ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन. ठीक है. Where is it? Okay, this is good enough. या फिर वी शुड हैव डन दिस टू बिगिन विद, है ना. चलिए इन दोनों में ही हम रखेंगे. विल कवर दिस. हाँ, तो which describes, अब देखिए, ये जो वर्क है फ्रेडरिक शिलर्स लेटर्स ऑफ द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन, in which describes a process of education that would eventually produce an aesthetic state. You should know this term, aesthetic state. एक्चुअली इसे हम किसी और चीज से दिखाते हैं. A concept that Riemann argued anticipated Joseph Goebbels' concept of the plastic art of the state. Again, एक term है, the plastic art of the state. In Riemann's view, the concept of aesthetic came to stand for all organist approaches, not only to art but to politics and culture as well. The experience of literature, he argued, minimizes the temptations of aesthetic ideology and to confuse sensory experience with understanding. This is something important. Let's cover this. So the experience of literature. What he said is the experience of literature. He argued minimizes the temptation of aesthetic ideology to confuse sensory experience with understanding. Since literature represents the world in such a way that neither meaning nor sense experience is directly perceptible. ठीक है, तो ये है इनका द एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर. ओके. ओके. सी डिमांड. ओके, वी विल नॉट. हाँ, आगे चलते हैं. इन द आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक, द मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, सो वी हैव टेरी गिल्टन इज नोन टू बी अ मार्क्सिस्ट, है ना. सो इन द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक, द मार्क्सिस्ट थ्योरी theorist, जो कि है एरी गिल्टन, provided both a history and critique of the aesthetic, noting the many ideological perversions and distortions in the history of the concept, but in contrast to Riemann, also identifying an emancipatory potential in a concept that had, Eagleton pointed out, originally been articulated in terms of freedom and pleasure. तो ये रहा आपका एस्थेटिक. अगेन फुली कवर नहीं है, दिस इज द आइडिया यू शुड टेक. एंड देन इसके बाद हम जो मेन है वो करेंगे, वो है हमारा एस्थेटिसिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक पीडीएफ जो है इन द पास कर रखा है. ये हमारा नेक्स्ट है. वेट कीजिए, फोर्थ हमारा डन है. लेट्स ट्राई कवरिंग दिस ऑल्सो. हमारा फिफ्थ टर्म विच इज एस्थेटिसिज्म. आई होप कि ये आज कवर हो जाए, बहुत बड़ा है.
ऑब्वियस सी बात है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव पॉलिसी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बट देन लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स ट्राई टू कवर दिस टुडे। क्या होता है एस्थेटिसिज्म? सो इन हिज लैटिन ट्रीट्स, ये वाला लेते हैं। In his Latin treatise entitled Aesthetica, the German philosopher Alexander Baumgarten applied the term aesthetica to the arts, of which the aesthetic end is the perfection of sensuous cognition. As such, this is beauty. In the present usage, aesthetics from the Greek pertaining to sense perception. So दोबारा करते हैं. In present usage, aesthetics designates the systematic study of all the fine arts as well as as well as of the nature of beauty in any object, whether natural or artificial. So, very good definition. Aesthetics designates the systematic study of all fine arts as well as the nature of beauty in an object, whether natural or artificial. So, it searches for beauty. ठीक है? Now, let's come to aestheticism. क्या होता है? Aestheticism, or alternatively, the aesthetic movement, was a European phenomenon during the latter part of the 19th century that had its chief headquarters in France. दोबारा, in opposition to the dominance of science and defiance of the widespread indifference or hostility of the middle class society of their time to any art. एक सेकंड रुकिए, गिव मी अ मोमेंट. Yeah, we can still do this. चलिए आगे चलते हैं. सो हम कर रहे थे एस्थेटिसिज्म. हाँ, तो in opposition to the dominance of science and in defiance. So what is this? In opposition to the dominance of science and in defiance of the widespread indifference or hostility of the middle class society of their time, or to any art that was not useful or did not teach moral values. French writers developed the view that a work of art is the supreme value among among human products, precisely because it is self-sufficient and has no use. It is self-sufficient and has no use or moral aim outside its own being. ये इन्होंने आर्ट को बोला, duty को बोला. The end of a work of art is simply to exist in its formal perfection, that is, to be beautiful and to be contemplated as an end of itself. The rallying cry of aestheticism became the phrase art for art. और ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, ये भी हम आगे जाके करने वाले हैं. ये है आर्ट फॉर आर्ट्स से, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये रहा आपका एस्थेटिज्म का स्टार्ट. यू विल फाइंड दिस आल्सो, आर्ट फॉर आर्ट्स से. The historical roots of aestheticism are in the views proposed by the German philosopher Immanuel Kant. Very important. So, again, let's start. The historical roots of aestheticism are in the views proposed by the German philosopher Immanuel Kant in his Critique of Judgment. That the pure, तो इन्होंने क्या कहा? The pure aesthetic experience consists of a disinterest. दोबारा वेट कीजिए.
चलिए स्टार्ट करते हैं. So the pure aesthetic experience consists of a disinterested contemplation of of an object that pleases for its own sake. See, we are experiencing art for art's sake, है ना? And not an object that pleases for its own sake, without reference to reality or to the external ends of utility or morality. The self-conscious movement, again, notice as a self-conscious movement, however, French aestheticism is often said to date from Theophile Gautier's witty defense of his assertion that art is useless. Preface to Mademoiselle de Maupin, 1835. एस्थेटिज्म was developed by Baudelaire. So ये एक और important चीज है. Developed by Baudelaire, who was greatly influenced by who? Edgar Allan Poe. डार्क रोमांटिसिज्म में ये बिलोंग करते हैं. एडगर एलन पो claim, influenced by Edgar Allan Poe's claim in the Poetic Principle, 1850, that the supreme work is poem per se, a poem written solely, again, a poem written solely for the poem's sake. So, art for art's sake. It was later taken up by Flaubert, Mallarmé, and many other writers. In an extreme form, the aesthetic doctrine of art for art's sake veered into the. Excuse me. Okay, so aestheticism is art for art's sake. It was later taken by Flaubert, Mallarmé, and many other writers. In its extreme form, the aesthetic doctrine of art for art's sake veered into the moral and quasi-religious doctrine of life for art's sake. ये भी हमने एक point पे experience किया, life for art's sake, or of life conducted as a work of art, with the artist represented as a priest who renounces the practical concerns of worldly existence in the service of what Robert and others called the religion of beauty. चलिए आगे चलते हैं. थोड़ा सा वेट, लेट मी चेक कि अभी भी चल रहा है. लेट मी चेक कि अभी भी लाइव पे है. आई थिंक कि अभी भी होना चाहिए. या अभी भी है. सो बच गए. वांट कि अभी कनेक्शन चला जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग ऑन. सो वे आर वी. हाँ, सो हम वॉल्टर पेटर की बात कर रहे थे ना. द व्यूज ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय Walter Peter, with his emphasis on the value in art of high artifice and stylistic subtlety. His recommendation to crowd one's life with exquisite, sensational, and his advocacy of the supreme value of beauty and of the love of art for art's its own sake. Okay, the artistic and moral views of aestheticism. हाँ, तो यहाँ से भी ये भी थोड़ा सा important है. The artistic and moral views of aestheticism were also expressed by Algernon Charles Swinburne and English writers of the 1890s, such as we have Oscar Wilde, we have Arthur Simmons, we have Lionel Johnson, as well as the artists J.M. Whistler and Aubrey Beardsley. The influence of ideas expressed in aestheticism, especially the view of autonomy, which is sufficiency. दोबारा, the ideas expressed in aestheticism, especially the view of the autonomy, self-sufficiency of a work of art. The emphasis on the importance of craft and artistry, and the concern of a poem or novel as an end in itself or as invested in with intrinsic values has been important in the writing of prominent 20th century authors such as आप विलियम बटलर की बात कर लीजिए, आप पी हल में हैं, टी एस एलियट हैं, एज वेल एज द लिटरेरी थ्योरी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ लिटरेरी थ्योरी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स. ओके, बिफोर एंडिंग विल कवर दिस. इसे हमें नहीं देखना है, आगे चलते हैं. ओके, सो डन है ना. हमारा आज का जो ये है ये कवर्ड है. सो वी हैव कवर्ड 5. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद
हमारा सिक्स टॉपिक विच इज अफेक्टिव पॉलिसी। मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूं, यहां से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अफेक्टिव पॉलिसी। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है सैटरडे को होने वाला है। सैटरडे को विल कवर फ्रॉम हियर एंड लेट्स ट्राई टू कवर एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास सामने आने वाला है। थैंक यू, वी विल एंड द सेशन राइट हियर।